हो रहा है, ऐसा कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें हर दिन, हर मोमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने नहीं दे रहा है। येस और नो? डू यू एग्री विथ मी? गुड इवनिंग अनु मैम। Something that is creating problems in our daily activities, in our daily lives. Okay, so what are those problems? Can you please list it down? जो भी आपके aches and pains है या problems है, उसको आप लोग लिख दें along with your name and number so that we can take it up in the last part of the webinar. So how many of y'all are ready to work on your body? How many of y'all are ready to take charge of your health without any external intervention? Subah उठ के popping a pill doesn't feel very good. Yes or no? किसको सुबह उठ के दवाइयाँ खाना अच्छा लगता है? Shoulder joint pain, there it comes, knee pain. Okay, so many pains and aches. बॉडी में है कि हम लोग परेशान हो रहे। सो व्हाट डू वी नीड टू डू टू वर्क ऑन आवर बॉडी? हमें क्या करना है? बड़ी आसान सी सोल्यूशन है। तो कितने लोगों को जानना है ये सोल्यूशन क्या है? बट डिफिकल्ट पार्ट क्या है आपको पता है? कि आपको डिसिप्लिन से करना पड़े। सो हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी टू वर्क ऑन अस ऑन आवर बॉडीज विद डिसिप्लिन? कितने लोग डिसिप्लिन से अपने शरीर के ऊपर काम करने को तैयार हैं? I can just see Manish sir with his hands up. The rest are not ready, it seems, or some people are feeling skeptical कि ये क्या बताने वाली? Poonam ma'am, okay, thank you so much. So if I have your permission, can I take 2 minutes of your screen time and share something unique about Ashtang Chikitsa, the online therapy program? Do I have your permission? Okay, thank you so much. Just give me 2 minutes. Okay, Ashtang Chikitsa, just a sec. Online therapy for neuromusculoskeletal problems. जैसा कि आपने लिस्ट डाउन किया, किसी को नी पेन है, किसी को फुट ड्रॉप है. So this all comes under the umbrella of neuromusculoskeletal problems. Namaskar, I welcome you all to the Ashtang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. Ashtang Chikitsa can also be used as a preventive method so that you keep your internal organs functioning at their optimum levels. Now, I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. शायद कुछ लोगों ने कुंभक सुना होगा और मोस्ट लोगों ने शायद नहीं भी सुना होगा कुंभक के बारे में. सो कुंभक आपके शरीर के अंदर कैसे काम करता है, ये अभी आप स्वामी जी के वीडियो से जान पाएंगे and how it resolves your current problems. Swami Raj Vibhu has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human being.
So when we say structure of the human body, what do we exactly mean? The musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way. That's our purpose at Avisa Healing and Fitness, a profound way of addressing the aspects of a human body. Now, let's come to the point, who is this webinar for? For people who are tired of temporary treatments, popping a pill, and still the aches and pains remain, and looking for a natural and permanent solution, जो कि आपको पूरी अंदर तरीके से ठीक करेगा, ऐसा कोई solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their current health problems. So, reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtang Chikitsa, freedom from pain and medicine. Swamiji will talk about the Ashta Sharir or the 8 softwares in the body. So I will just give you the brief about it. In detail, Swamiji will talk about it in his video. Shrishti Sharir, Garbha Sharir, Dosha Sharir, Marma Sharir, Pramana Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti and the Vikriti Sharir. तो जब हम musculoskeletal problems के बारे में बात करते हैं, so we are more concerned about the Prakriti and the Vikriti Sharir. Of course, the rest of the Sharir is also important, but Prakriti, yani ki regenerative factor, Vikriti is exactly opposite, that is the degenerative factors. तो होता क्या है, especially for women, post-menopause, once the degeneration starts, you feel the pains and aches. तो ये जो pains and aches है, ये आपको आज से शुरू नहीं हुआ. It had started maybe 20, 25 years back. But what you are feeling today is the pain. Why? Because of the imbalances between the degenerative and the regenerative factors. So Ashtang Chikitsa can heal knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issues, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder or drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy or the nerve issue. So Ashtang Chikitsa can also heal some of the very, very chronic problems that people are facing, for which allopathy has absolutely no solution and you have to live with it for life. Muscular dystrophy, multiple sclerosis, TMJ disorder, varicose veins, psoriatic arthritis, Ehlers-Danlos syndrome, spinal stenosis, myasthenia gravis, Bell's palsy, cervical spondylosis, carpal tunnel syndrome, ataxia, Guillain-Barré syndrome, AVN, Alzheimer's disease, dementia, glaucoma, vertigo, ankylosing spondylitis. So let's hear from Swami Raj Vibhuji what he explains about Kumbhak and how you can come out of your current problems through the Kumbhak therapy. Thank you so much for listening to me patiently. I would request everybody to please, who have joined in late as well, to please letter your problems along with your name and contact number. I will just tell you how you're going to proceed in the webinar. After this, you will be watching the recorded video of Swami Raj Vibhuji explaining how you come out of your current problems with Kumbhak therapy. Then we will be inviting somebody live who has already been a part of Ashtang Chikitsa. So he or she will be sharing their journey of Ashtang Chikitsa.
Then we will be sharing the program details of the online therapy class. Last but not the least, Swami Raj Vibhuji himself will be joining us live to answer your questions about your problems and how you can come out of it. Yes, we would like to take maximum questions, but due to time shortage, we might not be able to take all the questions. In that case, it will be answered in the webinar group. Thank you so much for listening to me patiently. Namaste, and over to Anilji to share the video. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली. डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी, लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, and he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द का रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance.
हार्मोन इम्बैलेंस होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, लोअर बैक पेन एंड योर नी पेन कैन हैपन. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी एग्जाम्पल नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtang चिकित्सा. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in Kumbhak Paddhati, in Kumbhak Kalachar or Ayurved Kalachar, in Yoga Kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए.
Now I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, प्लीज थिंक अबाउट इट, बिकॉज योर बॉडी इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते हो. योर बॉडी डजंट वांट टू. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर. इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? What do? You do long exhalation. Oof. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे. हमने क्या किया? वातावरण का खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? इट वांट्स टू इनहेल लेस एंड एक्सहेल मोर. सो इज कंस्ट्रक्शन हैपनिंग मोर और डिस्ट्रक्शन हैपनिंग मोर? लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, नो कंस्ट्रक्शन. सो आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है, it doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to, a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो, see a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. यू होल्ड योर ब्रेथ. इफ देयर इज अ बैड साउंड, यू क्लोज योर ईयर्स. आप नहीं सुनना चाहते इसको, यू होल्ड योर सेंसेस. सो होल्डिंग योर ब्रेथ, होल्डिंग योर सेंसेस इज कॉल्ड एज कुंभक. इसको नाम दे रहे हैं हम. सो इट इज नॉट जस्ट ब्रेथ होल्ड, इट इज द होल्ड ऑफ सेंसेस ऑल्सो.
आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऑल द 5 सेंसेस, you hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप डिजेनरेशन स्टॉप नहीं कर सकते. दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ. यू विल एज, बट यू मस्ट एज ग्रेसफुली. ठीक है, तो हाउ टू बैलेंस विकृति? देयर इज अ मेथड टू बैलेंस विकृति. अष्टांग चिकित्सा विल गिव यू दैट मेथड टू एनहांस प्रकृति एंड बैलेंस द विकृति. सो देन नेक्स्ट थिंग, व्हेन देयर इज अ रीजनरेशन, कोई नई चीज पैदा हो रही है, सो इट विल एक्सपैंड, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. सपोज योर वन हैंड बिकम्स लॉन्ग, द अदर हैंड रिमेन्स शॉर्ट. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. विल यू गेट जॉइंट प्रॉब्लम इन वन ऑफ द शोल्डर्स? आपको एक शोल्डर में जॉइंट प्रॉब्लम आएगी ना. सो इफ यू हैव वन लेग अ लिटिल लॉन्गर देन द अदर लेग, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में नी पेन होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक मसल्स खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना. Skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. So disalignment, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. 3 basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा ना. आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें. जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यस और नो? सांस रोकी आपने?
even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है, वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go. Let's go to the third part, Pramana. Now, one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण means density. इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार, डेंसिटी. इसी को धातु भी कहते हैं. वी कॉल इट धातु. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी, इजंट इट? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. लाइक बोन इज वेरी मच डेंस. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. योर मसल्स इज लेस डेंसर देन योर बोन. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. Rasa, Rakta, Mansa, Med, Asthi, Majja, Shukra. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के tissues हैं. If the density becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी ऑर्गन्स है ना, इनको काम करने के लिए देयर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड. सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आवर ऑर्गन. हमारी ऑर्गन वीक हो रही है. व्हाट इज डायबिटीज? योर पैनक्रियाज इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. व्हाट इज हाइपोथायराइड? योर थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, है ना? इट हैज ऑल्सो रिलेशन विथ लिवर. व्हाट इज किडनी डिजीज? योर किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. ऑर्गन डैमेज आजकल ज्यादा है. यू विल सी मोर क्रॉनिक डिजीज आर देयर, है ना? ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज. सो हाउ डू यू करेक्ट योर ऑर्गन? सपोज देयर इज अ जॉइंट पेन ड्यू टू लिवर डिसफंक्शन. लिवर के कारण आपके शरीर में जॉइंट पेन है, इन्फ्लेमेशन. सो यू विल हैव टू करेक्ट द लिवर. आपको लिवर ठीक करना पड़ेगा. इज देयर अ मेडिसिन टू करेक्ट लिवर? नो, देयर इज नो मेडिसिन टू रिजुवेनेट योर ऑर्गन. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुवेनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए.
हाउ डू यू क्रिएट दिस स्ट्रेंथ ऑफ पुशिंग? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ, यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ बिहाइंड. करके देखिए दोबारा, अगेन डू इट अगेन, सी, पुश इट हार्ड. यू होल्ड योर ब्रेथ, सांस रोकते हैं आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ, यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, तो ये भार आप उठाते हैं. सो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यू कांट लिफ्ट वेट विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको, तो कहां जाएगा ये डायरेक्शन? कहां जाएगा? इंटरनली. योर हार्ट रेट विल इंक्रीज. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम, पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the pramana sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए, and there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also, छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly.
For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, new cellular form, better cellular formation. अगर वो environment ठीक नहीं होगा, तो wrong cellular formation called, and this is called as cancer. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए, if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम मर्म अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in अष्टांग चिकित्सा, there is a part called as अंगन्यासा and marma vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना? So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of this word called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? Movement को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाएं, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. How do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. Yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's really temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak.
Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do Vata Pitta Kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do Kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So, neuro problem, usually, कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about, so, what people were talking about? Spondylitis and what else? Neuro problem. Now, something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't, no, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing Kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There was a marathon. There is a marathon runner. She's a lady, a lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, उसका marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma.
When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now now been busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे ग्रेविटी के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You'll feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. You'll not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces.
So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module, and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंगन्यास. The second one is called as hatha vinyasa. The third one is called as kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. कोई magic दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप system and you'll see magic happening in your life. So it is important wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ and you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. So I think we've got an insight as to how Kumbhak works and why we need to work on our internal system to get rid of our pains, aches, and inflammation, for which in allopathy, they probably give you the same medicine. So which is not true because one size does not fit all. So one medicine cannot take care of every human body which reacts differently and which has different set of weaknesses, etc. Thank you so much. Now I would like to invite Vijay sir to please join in and share his journey of Ashtanga Chikitsa. Vijay sir, can you hear me? Vijay sir, am I audible? Yes, it's audible. Okay. Sir, you can please unmute yourself. Yes. Now I am audible?
Yes, sir. Thank you so much for joining us. Thank you. See, I want to see. My name is Narasimhan, Vijay Narasimhan calling. Okay, so I have previously I'm having a problem with ankylosing spondylitis for the last 10 years. I've gone through for the allopathic and all those things, and Ayurvedic, homeopathic, all this right. And my wife recommended to join this Kumbhak therapy. I joined in the month of January. After the joining this, I was doing regularly as per the guidance of the Swamiji. So 9 weeks have completed. See, what are the problems I was facing, I will let me explain. See, the ankylosing spondylitis means all joints. I am not able to straighten my body. I become a bend, shoulders, these joints, knee pains, back. So doctor suggested me to go for the back operation, which I was thinking not to go for the operations. Then in the meantime, so my wife called me and told this, why can't you try for this? So I was, joined this class. Then after doing some Kumbhak, after a couple of weeks, I found there are a lot of changes in my body. So then I used to do early in the morning, 3 o'clock. So before Kumbhak, I was not able to close my legs together while sitting, while sleeping, and while get up also, I used to have a lot of pains in the body. After doing this Kumbhak, those things and all really vanished. And I was able to close my legs together and the shoulders and all. I'm able to lift like this completely. So absolutely, there is no pain while lifting. And little bit neck pain is there now. Okay, I'm practicing. I think that is also will go off in a couple of practice. Really, it's a lot of help, by doing this Kumbhak. And of course, all mentors and all, they taught me very well. And when practicing also, they used to guide me if at all I'm doing any mistakes. Okay, that's a one. So while the basic problem, main problem, I was not able to walk. And I was not able to work in the office. Now I am happy. Earlier I was working from home, in sitting one place, with struggling a lot of pain. With the pain only I used to work. Now, after this Kumbhak, I am able to go to office in the cab weekly thrice, and still I am also now I am in the office only. I am working comfortably. So my suggestion is, whoever is joining this, even I am also going to recommend for so many people to get rid of all the diseases, especially neuro issues. Okay, so this is a wonderful program. I never thought of this, and the online programs. I need not to go to their spot and then put a lot of efforts and all those things. It's a very simple technology and guidance giving by Swamiji and PDFs, all those things and all. Now the recording session, all those things and all. It's a wonderful system. But I'm very much happy by reducing all my pains and this joint, especially joint pains. So I need to thanks once again for all the people, but I strongly recommend those who are going to join this with so many other illness or something like that. Definitely, I can give you the guarantee, though everybody will get rid of this. Thank you so much, Vijay sir. And we were very happy to know about your journey and how you have been getting rid of your autoimmune disorder, ankylosing spondylitis. Thank you so much once again. Amit sir, could you please join in? Can you please unmute yourself, sir? And if you could switch on your video, that would be great. Is it Mr. Amit Kumar or Amit Gupta? Amit Kumar, yeah. Okay. I have unmuted you, sir. Anilji is not unmuted. He's on mute.
Amit Kumar sir, you can unmute yourself. Yeah, hi. Hi, sir. Hello. Yeah, hello. Yes, Hi. sir. Yes, How are sir, you? you're audible. Yeah, Fine, yeah. fine. I'm traveling, so my video will not be very clear. No worries, no worries. Okay. So I would like to thanks. First of all, I would like to thank Avisha and all the mentors like Salini ma'am and Sony ma'am for such a wonderful program. So I have joined this program on the recommendation of one of my colleague in gym, and I'm suffering from a very acute lower back issue for the last 7-8 years. And I've visited multiple doctors and got MRI medications, but I didn't got any relief from my lower back pain. So anytime, most of the time, I am suffering from lower back pain, and it has a very what do you say effect, different effect on my mind. Day to day, my all day to day activity has been hampered due to this lower back pain. Apart from that, I was suffering from this diabetes also for the last 2 years, and it is really very high. So I got one of my colleague who has joined this program earlier, and he was really very much what do you say got relief from his pain. And on his recommendation, I joined this program, and what results were really recommendable. My sugar level has come down drastically, and my HbA1c level was 6.87 earlier. But what I saw now that it is under control, and it is around 5.4, 5.5 for the last 2-3 months. And my lower back pain has reduced. I have got my customized program also last week, and those customized program. But for the last 2 months, whatever kriya I have done, so that has reduced my lower back pain, and it has reduced my sugar level. Apart from that, I have got like earlier it was like some letharginess I was feeling most of the time. That has gone up. So I can surely vouch for this program, and I can say that it is very much helpful to all the people, all age group. I am right now. I am 38 only, and I think if I am going to perform this for a long time, it will heal me internally, and I'm very much grateful to everyone for such a wonderful program. Thank you so much, sir. Amit, sir, in spite of the fact that you're traveling and you're busy, you took time out to share about your journey with all the participants. Thank you once again. So now I would, Thank you, ma'am. thank you. So I'm sure people are waiting for the program details as to how they can join this wonderful program and get rid of their aches and pains. So over to Anilji to share the program details. Thank you, Rachna ji. Just give me a few seconds. Are you able to see my screen? Yes. Okay. So let's get to know the details very quickly. जल्दी से जानते हैं प्रोग्राम के डिटेल्स, क्लासेस, टाइमिंग्स और जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि फीस क्या होगी. A lot of people just wait to for us to announce the fees. Let's see. जल्दी चलते हैं. It's a, first of all, this is a guided program which is conducted online by trained कुंभक mentors. ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो Zoom क्लासेस के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू कंडक्ट किया जाता है. ये कुंभक मेंटर्स हैं जो क्लासेस कंडक्ट करेंगे, जो इंस्ट्रक्ट करेंगे आपको. स्वामी जी द्वारा ट्रेंड होते हैं कुंभक मेंटर्स. ये आपकी क्लासेस के इंस्ट्रक्टर्स रहेंगे. प्रोग्राम मॉड्यूल्स क्या है? इस प्रोग्राम में 3 मॉड्यूल्स हैं. वात मॉड्यूल, पित्त मॉड्यूल एंड कफ मॉड्यूल. हर एक मॉड्यूल का 21 दिन का अवधि है. द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ईच मॉड्यूल inside the Ashtanga Chikitsa program is 21 days. So total engagement or the total duration of the program is 63 days. 63 दिन का total program का अवधि है. Program overview 9 + 1 10 weeks. मैंने अभी कहा 9 weeks. एक extra हफ्ता क्यों ऐड हो गया है? Why 1 week has been added to it? We'll understand in a short while. There'll be 2 live classes every week
out of which one is called as the learning class or the main class, and the other one is the mentoring or the practice class. हर एक हफ्ते 2 क्लासेस होंगी 9 हफ्ते के लिए. एक मेन क्लास होती है और एक प्रैक्टिस क्लास होती है. इसमें फर्क क्या है वो हम थोड़ी देर में जान जाएंगे. व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? आगे आपने क्या करना है? प्रोग्राम फी पे करनी है, पे द प्रोग्राम फी. और एक स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग है फॉर पीपल हु हैव स्टेड बैक. जो लोग अभी वेबिनार में लास्ट तक रुके रहेंगे उनके लिए स्पेशल प्राइसिंग है. उसके बाद आपने पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म भरना है. आफ्टर दैट यू टू फिल द पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म so that we can create login credential for course access. ये course access क्या है वो भी हम जानेंगे. What is this course access for which you need to have login credentials? You'll get to understand in a short while. After that, you start attending your classes, starting with module 1 or the VAT module. Total classes once again for module 1 or the VAT module, 6 classes, same for Pitha module and same for the Kapha module. So 6 into 3, 6 classes every week into 3 modules makes 18 classes. But then you see one extra customization class. If you see 18 learning classes plus 1 customization class. What is this customization class? Just wait for some time and you'll understand. Now, batch 125th is starting on 10th April, which is a Monday at 6 p.m. 125वां बैच शुरू हो रहा है 10 अप्रैल से, जो कि एक सोमवार का दिन है, शाम 6 बजे. ये सभी डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाएंगे और जूम चैट. ऑल दीज डिटेल्स विल बी शेयर्ड इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज इन चैट हियर. मेंटर क्लासेस और द प्रैक्टिस क्लासेस will be on Thursdays for module 1, for module 2 on Fridays, for module 3 on Saturdays. ये सब अभी आपको ग्रुप में मिलेगा इंफॉर्मेशन और चैट में भी. What is the class experience like? क्लास का पूरा एक्सपीरियंस कैसा होता है? जैसा कि आप जान चुके होंगे ये लाइव सेशंस है. As you must have known by now, these are live sessions conducted on Zoom app. Mentors watch all the participants so that they can give you and the feedback and correct you there and then. हमारे जो मेंटर्स हैं वो आपको कैमरा पर देखते हैं, इसीलिए कैमरा आपको ऑन रखना कंपल्सरी होता है क्लास में, ताकि वो आपको देख पाए, क्योंकि ये एक ऑनलाइन कोर्स है. कैमरा ऑन नहीं होगा तो कैसे जानेंगे? एंड वी आर एक्सपर्ट्स एट ऑफरिंग दिस थेरेपी ऑनलाइन so that you can benefit just being at your home or wherever you are without visiting any physical location. Written instructions होंगी इंग्लिश और हिंदी में. There'll be written instructions in English and Hindi as well. Session recordings or the class recordings are provided. There'll be a lot of extra things. काफी extra चीजें जो होंगी इसमें, mental practices, unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan. This is a diet perspective. You'll get a video from Swamiji about how to use food so that it does not harm your body. और basics होंगे, fundamentals होंगे food के. Diet plans नहीं होगा. There are no dietary restrictions when you are taking this therapy. You are given a diet perspective. Then there'll be simple detox processes and a lot of knowledge will be shared during the course of the program. Now, if you see the title here, yearly expenses, these are expenses that you may already be doing just to manage the disease that you are into. And you'll understand why I'm sharing these figures with you. These are yearly figures. ये साल भर की में शायद इतना खर्चा हो रहा होगा आपकी जो प्रॉब्लम है, जो हेल्थ इश्यू है, उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो क्रॉनिक प्रॉब्लम बन चुकी है. डॉक्टर की फीस हो सकती है 6,000 से लेकर 12,000 तक. The doctor fee may be 6,000 to 12,000 depending on the city or the kind of specialist that you are consulting. If you are into physiotherapy, 12,000 to 30,000 could you could already be spending, and medicine another 15,000 to 30,000. So total, if you do 33,000 to 72,000 per year, you could already be spending. And if you are into allopathy treatments, then we all know the side effects of it. So we will not talk about that here so much. So 33,000 to 70. Why I'm sharing this is because when I announce the program fee, you understand the kind of, the affordability of the program of Ashtanga Chikitsa program, which is very, very less compared to what you already just to manage. This is not cure. The kind of money you may be spending is not actually curing. It's managing the problem only.
and for maybe many years for a lot of people. And before I share the program fee and all, it's also very important to know who this program is not for. ये जानना भी जरूरी है ये प्रोग्राम किन लोगों के लिए नहीं है, ताकि ये क्लियर हो सके ये किन लोगों के लिए एक्चुअली फायदा हो सकता है. This is not for people who are looking for a magic pill and wants results tomorrow only. See, we are used to popping a pill whenever we get into a slightest of the problem. If you look around, if your child or child in a family, they fall sick, they have a slight cough or cold, we straight away take him to the doctor. And they give you most of the time it's allopathy medicine only, or a pill or a syrup. We don't allow the body to heal. हम शरीर को मौका नहीं देते हैं हीलिंग करने का. तो एक आदत बन चुकी है बचपन से कोई भी दवाई तुरंत खा लेने का. शरीर को हम लड़ने नहीं देते हैं बीमारी से. तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है इस थेरेपी में. There's nothing like this. No medicine is used in this therapy. So that's one thing. So if you're looking for some medicine, this is not for you. And this is also not for people who want just results tomorrow. Because this problem that you are into did not come overnight. So if it will not go overnight also. That has to be understood. And this is not for those who are not ready to work in their body, because it will take you about 80 to 90 minutes every day initially. Initially, it will take you more time because the kriyas will be new to you. After you get used to and practicing the kriyas, it may take another maybe 50 to 60 minutes. But this is the time that you'll be investing on your body, because internal strength is the cure. No other thing. And for working internally, you'll have to give some time. And this is not for those who are impatient. We understand that when you're into pain, into a disease, patience goes down. But after everything is said and done, we just wanted to clarify this point. And it's not for those who are looking for a free treatment or just some tips. This point has to be elaborated properly, because many people misunderstand that this is a free treatment, because all of you must have seen an ad on Facebook and come to this webinar. In the ad, we advertise that it's a free introductory webinar, but people mistake it for the free treatment. So just want to clarify so you don't get later into arguments with us. So it's not a free treatment, and it's also not for those people who are who've come here just for some tips. No therapy, no healing works on just some tips. कोई भी healing या कोई भी treatment tips से नहीं होता है. अगर ऐसा होता तो YouTube में हजारों वीडियोस हैं, हजारों एक्सपर्ट्स हैं, तो आप उनको देखकर ठीक हो चुके होते टिप्स से. कोई भी जो लॉन्ग टर्म थेरेपी है, एक परमानेंट सॉल्यूशन है, वो एक पॉइंट से शुरू होता है और एक पॉइंट पर खत्म होता है. एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है. तो इसीलिए ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए नहीं है जो फ्री ट्रीटमेंट समझ रहे हैं या फिर जो सिर्फ टिप्स लेने आए हैं. नाउ अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में होगा क्या. प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर रूट कॉज डिटर्मिनेशन. This alone could be worth the whole fee of the program. Why? Because if you paid attention in the video, Swamiji talks about the Pran Shakti diagnosis to determine the root cause. Which force out of those 84 forces has become weak in you, due to which you landed in your current situation, health issues. So your diagnosis, normally most of the allopathic diagnosis, they call it diagnosis, but it's just an observation. आप MRI कराते हैं, आप एक्सरेज कराते हैं, कोई भी टेस्ट कराते हैं, उससे सिर्फ ये पता लगता है कि आप ये देख पा रहे हैं. डॉक्टर विल टेल यू वी सी दिस, बट व्हाई दैट हैपेंड दे कैन नॉट नो. यहाँ पर वो पता कर पाते हैं स्वामी जी. सो दैट्स व्हाई आई सेड दिस अलोन कुड बी वर्थ द होल फी ऑफ द प्रोग्राम. Second point, weekly there'll be one main class of 60 to 90 minutes. Why 60 to 90? 60 minutes is the actual class, and then we take up questions and doubt clearing during the live class only. So that's why another 20 to 30 minutes. Then weekly one practice class, again 60 to 90 minutes. Online course access for 6 months. What is this online course access? Like I said, the videos, the classes are recorded and they are uploaded to the course dashboard, where you'll get access to all the recordings, and this access will remain with you for 6 months, which is enough time to learn all the kriyas by heart.
6 महीने तक आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस रहेगा, जिसमें आप आसानी से सभी क्रियाएं सीख पाएंगे। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 2-3 महीने से ज्यादा आपको फिर भी नहीं रहेगा, बट स्टिल कई बार होता है कि क्लासेस मिस हो जाती हैं, तो 6 महीने का टाइम इसलिए दिया हुआ है। देन वीडियोज ऑफ ऑल क्रियाज डन इन द क्लास। Why, how this is different from the class recording? Class recording is of the whole duration, 90 minutes. But these videos are of each kriya separately. Some kriya may take 2 minutes to watch, some may take 10 minutes, some may take 20 minutes. So why to watch the 90 minutes class duration? If you want to see, that's okay. But if you want to save time, you just watch the particular video of a particular kriya and save time. Written instructions in English and Hindi, Hindi और English दोनों में लिखित निर्देश मिलेंगे. These instructions can be downloaded and even you can print those instructions to follow while doing your daily kriyas. Private WhatsApp group to ask your doubts and questions. Like 2 days of the week, you'll be live with us. The remaining 5 days, when you're practicing on your own, and if you have a doubt that time, so this is the place you'll be asking your doubts and questions. Our mentors and experts are inside this group. They'll be answering your questions and they'll be guiding you step by step. So nothing to worry about. Then individual participant progress tracking and feedback. We take our weekly progress feedback from all the participants so that we know that if you're making progress or not. If not, then we try to find out the reason and then correct it so that you can benefit from this unique, amazing therapy. Therapy customization for each participant in the 10th week. Please pay special attention to this. If you remember, the first point I talked about Pran Shakti diagnosis. Now, in the 10th week, the kriyas or the therapy will be fine-tuned and customized based on this diagnosis. Now, let me just brief you how this diagnosis is done so that you understand. First of all, this is a non-medical diagnosis. Secondly, this is an online diagnosis. Now, both things may sound very, very, what do you call, uh, different. And then how is it is possible online and how is it possible that it's a non-medical diagnosis? Let me try to tell you what this is. You'll get a link to a form and you'll be asked to do some experiments on your breath and on your emotion and record those in the form. Second, you'll be talking or you'll be writing in the about your problem in the form in detail. And third, you'll be uploading a selfie photograph in which the specs or the spectacles should not be there on the eyes. Chashma nahi hona chahiye usme. And in case of ladies, no makeup also. So when these three things reach Swamiji, he is able to know the root cause. Remember the 84 forces he talked about? Which force out of those 84 forces has become weak, due to which you landed in your current health issues? That he is able to find out. So based on that diagnosis, the therapy will be customized in the 10th week. Now, another question may come in your mind. Why 10th week? Why not from the starting? There's a reason for it. The body is prepared to receive this customization. So body is prepared in these 9 weeks. What happens in these 9 weeks? Three main things. A lot of things that happen in these 9 weeks, but primarily three main things. First one, the Vata, Pitta, and Kapha of the body is balanced. Second, there are three main alignments of the body: the inner thighs, navel, and the chest. Those are structural alignments. So those are corrected. And third important thing is you are taught controlled exhalation. This therapy is based on controlled exhalation. So most of the people do not have any control on the exhalation part, right? So when these three things are done, then the body is able to receive this customized or fine-tuned kriyas. So that's the reason it's done in the 10th week. 10th and the last point is you get extended support for 30 days after the program is over. We understand that this is an online program, so many a times people are not able to attend all the classes. So they may miss some explanation. So they may miss some important classes. So that's the reason that we extend our support to 30 days after the program is over. So you need not worry if you miss any class. A lot of support is there and a lot of care is taken of all the participants, as some of the people in who shared their experience told also. Okay. Now, all these points are already talked about.
And then the program fee for Ashtang Chikitsa, this is the most exciting part of the presentation, 14,500. This is the normal pricing, but like I promised you that there's a special webinar pricing for people to stay back. What is that? Let's get to know. Just 6,500 for the complete program. The 18 classes, one customization class, the Pran Shakti diagnosis, course access or the recording access for 6 months, WhatsApp group support on a daily basis for 6 days, everything included in the 6,500. So it has been made so affordable. That's the reason I told you that compared to what you may already be spending to manage your disease, this is very, very affordable for most of the people. Now, how to enroll? First step is to pay the program fee. Then you share that receipt in the WhatsApp group. And then step 3 would be to fill the participant onboarding form, the link of which will be shared with you on your personal chat by Neha from our team. Step Sorry for Uh, the disturbance. I think there's been some connection errors. So Anilji will come okay. back. Yes, Rachnaji, we are you can able to see my see. screen? Okay. Yes, yes. Okay. Okay. And the step 5 and the last step would be start attending classes to learn Ashtang Chikitsa, a simple 5-step process. Payment methods already shared in the WhatsApp group as and in chat also. Now, I just like to stop here and to talk about our super team, which will be at your service. We do not call ourselves as a super team. Our participants call us that. They have given us this label. Why? You'll understand when you get the support, the kind of support inside the program when you enroll. We have Rachna Shrimal Bothra. She's the program director and she's the host of this webinar that you are attending right now. Shalini Bhagwat, she's the class manager. She takes care of all the batches, timing, shifting and all. Ashwini Kumar is the IT manager. Then we have mentors. Ranjana Swain, R.D. Gupta ji, Soni ji, Aruna, Neena, Suruchi, Arundhati, Meera, Sushma, Rastogi, Kishore Kadam. We have so many mentors. And the best thing is that all these mentors have come from the participants only. Pay attention. I'll repeat once again. All these mentors have come. These were the same people who were a part of the previous batches. They got benefited and they felt so strongly about Ashtang Chikitsa and Kumbhak that they, decided to become mentors and help all the other people also who are facing a lot of health issues. So they've been a part of what you may be, become by enrolling in the program. So they've got the results and now they are helping more people like you. Neha Upadhyay, she's the enrollment in charge. She'll be the person who you'll be talking to the most before enrolling, before starting your classes, the payment links and everything. She'll be getting your forms filled. And then Anil Chan, that's me, I'm the WhatsApp admin, and I'll be answering your questions in the WhatsApp group. Like Swamiji will be live shortly after this to answer your question, but due to shortage of time, he may not be able to take all the questions, but you need not worry. And please don't be unhappy. Please don't be sad. Please don't be angry if your question is not taken, because you can type your question in the WhatsApp group and I'll answer all the questions myself. If I don't have the answer, I'll consult Swamiji to get the answer to you. So please don't worry if your question is not taken during this live webinar. Then Himanshu Reddy, he is the technical person who takes care of all the video uploading, the app installation, everything. So during the course of the program, if you feel any face any technical difficulty, he'll be the person who will be helping you out. Then we have Anita ji, she's the personal support executive, and you'll have access to her directly also. You'll get a number and then you'll be able to talk to her if there's something which you need to discuss personally. And with this, I come to the end of my part and I hand over the presentation webinar back to Rachna ji. Thank you. Thank you so much, Anilji, for sharing the program details. So now I think Swamiji has just joined in. Let me just check. Yes, he's joined in. So we'll put him on spotlight and try to answer as many questions as possible.
Swamiji, we will just be switching on his video. I think there is some problem at his end, so he's not able to switch on his video. Just give him 2 minutes. Swamiji, can we start the question and answer? I'm not able to start my video because there is some problem from that side. Okay. Now you try. Swamiji, please try now. Yes. Okay. Okay. Namaste, Swamiji. Good evening. So we'll be taking up the question answer. Okay. So there is a question from, just a sec. Rakesh Jain, sir, I have sciatica and slip disc problem. Usually, the longest nerve in your body is sciatica nerve, and sciatica also creates a balance in your body, alignment rather, left and right alignment. ये क्या होता है कि ये पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी जहाँ पे ऊपर की ओर में हाइपोथैलेमस की तरफ से शुरू होती है और ये एड़ी तक जाता है. So it is responsible for maintaining the alignment of your body. Now, if the alignment is not proper, and this example I give all the time, कि आपकी रीढ़ की हड्डी का ना there is a strength of tension, जो उसका टेंशन बना रहता है ना, जैसे कि 33 stones if you collect and drill hole and put a rope inside and stretch it, then all the stones will get aligned. ना यही रीढ़ की हड्डी है ना आपकी, ये जो फोर्स है, ये जो टेंशन है जिसकी वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी अलाइन रहती है, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद सियाटिका. सो अलाइनमेंट अगर आप करेंगे तो ये दोनों चीज चली जाएगी. अभी आपका लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट नहीं है, राइट. एंड द सेकेंड फैक्टर विच इज वीक इनसाइड योर बॉडी. नाउ दिस आई गिव एग्जाम्पल वंस अगेन एंड यू कैन टेस्ट फॉर योरसेल्फ. आप लोग किन लोगों को स्लिप डिस्क होने के चांसेस हैं ये चेक भी कर सकते हैं. आप कैसे कर सकते हैं? सो आई विल गिव यू अ लिटिल एग्जांपल. इफ यू कैन इनहेल फॉर अ काउंट ऑफ से सपोज आपकी कैपेसिटी 5 सेकंड की है इनहेलेशन. 5 सेकंड इनहेल करने के बाद में इफ यू कैन होल्ड 4 टाइम्स मोर, 4 गुना ज्यादा अगर उसको रोक पाएंगे, उसके बाद में इफ यू कैन एक्सेल फॉर 10 लाइक 5 सेकंड इनहेलेशन में 10 सेकंड अगर एक्सेलेशन कर पाएंगे, देन योर व्यान फैक्टर इज ओके. इसका मतलब आपका स्लिप डिस्क नहीं होगा. लेकिन अगर वो नहीं कर पाए, ब्रेथलेस हो गए, तो इसका मतलब उस इंसान का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, स्लिप डिस्क होने के चांसेस हैं. तो वो आपको लेके आना पड़ेगा, वो स्ट्रेंथ, व्यान शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो तो आपको लाना पड़ेगा. फर्स्ट इज अलाइनमेंट, द सेकेंड इज द फोर्स, व्यान शक्ति है वो लेके आना पड़ेगा. द थर्ड फैक्टर इज मेटाबॉलिक बैलेंस. हमारे शरीर के अंदर हमारा मेटाबॉलिक बैलेंस अभी बिगड़ रहा है. आप देखो जितने भी क्रॉनिक डिजीज हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, थायराइड, ये सब मेटाबॉलिक डिजीज है. इसी से रीजनरेशन होता है. तो आपके सेलुलर डीजनरेशन होगा तो स्लिप डिस्क जल्दी हो जाएगा. कहीं अगर हड्डियों के बीच में कहते हैं ना घिस गई हैं, वो घिस गई है क्या, वो रीजनरेशन नहीं हो पा रहा वहां पे. उसके लिए आपका मेटाबॉलिक फैक्टर स्ट्रांग होना चाहिए. ये 3 चीजें अगर आप करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा. ठीक है ना. मगर ये हम कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि ये ट्रीटमेंट यही है, और तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है. ऑपरेशन कोई ट्रीटमेंट नहीं है. ऑपरेशन करके एक जगह ठीक करेंगे, दूसरी जगह प्रॉब्लम आ जाएगी. तो ये 3 चीजें करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. Okay. Just 1 minute. Okay. I have severe muscle, Lakshmi Sukanya ma'am writes, I have severe muscle and nerve degeneration. नाउ रीजनरेशन, पहली बात तो देखो कि हमारा शरीर रीजनरेट करता है, हर चीज को रीजनरेट करता है. मसल रीजनरेशन क्यों नहीं हो पा रहा, नर्व रीजनरेशन क्यों नहीं हो पा रहा. ना आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ये जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, उनको समझ में आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई एक्शन ले पाएंगे. तो आपका शरीर रीजनरेशन के लिए करता क्या है,
मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या, आपके फूड को कन्वर्ट करता है अपने टिश्यूज में। हाँ, सिंपल तरीके से बोले, आप जो खाते हैं उसको कन्वर्ट करता है। लेकिन दो चीजें आप ध्यान दीजिए कि आप क्या खाने लग गए। तो पहली बात तो आप नेचुरल फूड नहीं खा रहे हैं, आप जो भी भोजन कर रहे हैं वो डिविएटेड है, वो आपका नेचुरल फूड नहीं है। तो क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, प्रोसेस्ड, है ना, इस तरीके का, इनऑर्गेनिक, इस तरीके का फूड खा रहे हैं, तो उसको प्रोसेस करना बॉडी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, वो ठीक से कर नहीं पाता। दूसरी बात, उसका प्रोसेस करने के फैक्टर जो भी होते हैं वो हम वीक करते हैं जब भी हम कोई अलग चीज डालते हैं, केमिकल डाल देते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हम शरीर में डालें तो इंसुलिन निकलना चाहिए, प्रोटीन के लिए थायरोक्सिन का इस्तेमाल होना चाहिए, है ना। मगर हम जैसे ही केमिकल डालेंगे ना, वो रिलीजिंग, वो हार्मोन जो रिलीज होते हैं, वो एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं, वो फैक्टर वीक हो जाता है, दोबारा से मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम आ गया। तो दो चीजें, मेडिसिन एंड फूड, ये दोनों ही हमारा खराब होने के कारण हमारा मेटाबॉलिक फैक्टर ठीक नहीं है ना। ऐसे में क्या कर सकते हैं, एक और फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी खराब हो गया। ऐसे में क्या कर सकते हैं, क्या इनको बदल सकते हो एकदम से? नहीं बदल सकते। तो क्या कर सकते हैं, तो आपकी क्षमता इस डिविएटेड एनवायरनमेंट में भी इससे नुकसान ना हो, क्या वो क्षमता बनाई आपने अपने अंदर? हाँ, तो वो तो हमने बनाया ही नहीं, वो तो हमने बनाया नहीं। एग्जाम्पल, अगर आपका, जिसे कहते हैं बैलेंसिंग फैक्टर, इम्यूनिटी, बैलेंसिंग फैक्टर, रेजिलियंस, ये तीन चीजें अगर कमजोर आ जाती हैं, ये तीन चीजें कमजोर होंगी तो ऑब्वियसली आपका मेटाबॉलिज्म काम नहीं करेगा, डिजेनरेशन होगा तो रिजेनरेट नहीं कर पाएगा बॉडी। तो ये कैसे बढ़ा सकते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपका शरीर जब भी रीजनरेट करता है कौन सी चीज इस्तेमाल करता है, तो वो 6 तरीके के बल, फोर्सेस, बल इस्तेमाल करता है, अपनी शक्ति। बल को समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, किसी को बोलिए आप खड़े हो जाएं दोनों पांव को जोड़ के, और किसी को बोले आपको धक्का देने के लिए, तो आप गिरेंगे। आप नहीं गिरना चाहे तो क्या करेंगे, आप सांस रोक के अड़े रहने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सांस रोक के अड़े रहने की कोशिश है, ये आपका रेजिलियंस है। ये आप डिविएटेड एनवायरनमेंट में आपको कितना, आपको नुकसान हो कितना नहीं हो, वो क्षमता दिखाता है। जो बहुत जल्दी गिर जाएंगे उसका इम्यूनिटी और रेजिलियंस कमजोर है, जो देर से गिरेंगे उसका इम्यूनिटी रेजिलियंस ज्यादा है। तो देर से गिरेंगे मतलब, अड़े रहेंगे मतलब सांस रोकने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, वो कम हो गया, वो आपका कम हो गया, तो कोई भी चीज नुकसान आपको जल्दी कर रहा है। अब मेटाबॉलिज्म का फैक्टर भी जोर लगाना है शरीर को, तो उसी बल पे लगाएगा। वही चीज अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है तो 6 तरीके के बल बनाती है, 6 तरीके के फोर्सेस बनाती है, जिससे 6 तरीके के 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है। क्या क्या है वो, देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, ये कमजोर हो चुके हैं हम। यही अष्टांग चिकित्सा में हम इन बलों पे काम करते हैं, ताकि आप दवाई खा रहे हैं तो उससे नुकसान कम हो, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो, आपका रीजनरेशन स्ट्रांग हो, है ना। ऐसे मान के चलिए कि कोई चीज खा के आप मजबूत नहीं होते, यानी खाने के बाद आप मैराथन नहीं दौड़ने लग जाते। खाने को पचाने की क्षमता जो आपके शरीर की होगी ना, जो बल होगा शरीर का, उसकी वजह से आप रिकवर करते हैं, किसी और चीज से रिकवर नहीं। आप सोचते हैं अच्छा विटामिन खा लो, मल्टीविटामिन खा लो, और ये खा लो, वो खा लो, प्रोटीन खा लो तो आप रिकवर कर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो आपकी शक्ति के ऊपर है। तो शक्ति कौन बढ़ाएगा, दवाई तो नहीं बढ़ाएगी, कौन बढ़ाएगा, वो कुंभक बढ़ाएगा। क्योंकि आप कोई भी एफर्ट करते हो अपने दिनचर्या में भी, सुबह से लेकर शाम तक, तो सांस रोक के करते हो ना। करें एक्सपेरिमेंट, उंगलियों को फंसा लीजिए जरा, देखिए आप क्या शक्ति कैसे पैदा करते हैं अपने अंदर। उंगलियों को फंसाइए जरा और खींचिए, उंगलियों को फंसा के खींचो, पीछे देखिए, सांस रोका आपने, पीछे देखो, सांस रोका आपने। जब भी आप शक्ति अप्लाई करते हो, कोई फोर्स अप्लाई करते हो, तो सांस रोक के ही कर पाते हैं ना। एक वेट उठाना है, कैसे उठाते हैं, सांस रोक के। पुश करना है, धक्का देना है, कैसे धक्का दोगे, पीछे सांस रोकोगे ना। तो ये बल कमजोर हो गया आपका। अब ये बल तो किसी किताब में नहीं लिखा कि कैसे ठीक किया जाए, मगर आप जरा ध्यान से देखिए अपने आप को। शरीर ये बल वापस लाने की कोशिश करता है, मगर उसको प्रॉपर टाइम और वो कैपेसिटी आपको बिल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपने शरीर को। तो वही कुंभक करके हम ये बलों को वापस लेके आते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा,
जिसकी वजह से रीजनरेशन शुरू हो जाएगा। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है ऐसे, है ना, जो मसल्स जिनके बिल्कुल सूख रहे थे, वो मसल ठीक हो गए, सॉफ्ट हो गए। हार्डनिंग ऑफ स्किन था, वो सॉफ्ट हो गया। न्यूरो डिजेनरेशन हो गया था, ड्रॉप फुट, माइस्थीनिया ग्रेविस, लॉक जॉ, फ्रोजन शोल्डर, इस तरीके की कई सारी चीजें जिन लोगों को थी वो ठीक हो गई। क्योंकि ये आपका शरीर ठीक कर सकता है, दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। दवाई तो मैनेजमेंट है, बहुत जरूरत है उस समय लीजिए, मगर क्या है कि दवाई तो ट्रीटमेंट नहीं है ना। दवाई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा आपको, अपनी शक्तियों को तो बनाना ही पड़ेगा आपको, और वो कुंभक से बनती है। तो इसीलिए जब कुंभक करेंगे तो मेटाबॉलिज्म जैसे इंप्रूव होगा तो रीजनरेशन शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पे लकवे का पेशेंट आया और वो 96% उसका ठीक हो गया, न्यूरो रीजनरेशन हो गया, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है। तो रीजनरेशन तो होता है, मगर क्या आपके पास वो बल है रीजनरेशन का, है ना? तो वो तो बढ़ाना ही पड़ेगा, वो तो कोई और चीज नहीं बढ़ा सकती। वो भोजन नहीं बना सकता, वो मेडिसिन से तो बिल्कुल भी नहीं, उसी से तो खराब हुआ है। तो ये करेंगे तो रीजनरेशन शुरू हो जाएगा, तो मसल आपके जो सूख रहे हैं, जो डिजेनरेट हो गए हैं, वो वापस रीजनरेट होना शुरू होंगे। केवल टाइम का फैक्टर है कि किस लेवल तक आपको प्रॉब्लम आ गई है, तो कितना टाइम देना पड़ेगा। कुछ लोगों का 2-3 महीने में ही हो जाएगा, कुछ लोगों का 6 महीने में, कुछ लोगों को साल भर लग सकता है। केवल टाइम का फैक्टर है। तो अपने बल बनाएंगे तो मेटाबॉलिज्म और साथ में रीजनरेशन भी होगा। Rajendra sir talks about my son has knock knees. Is it curable by Kumbhak? लॉकनी जब हम कहते हैं, इट इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ समथिंग कॉल एज मूल बल और मूलाधार। ठीक है ना, मूलाधार अगर वीक होता है तो जाके लॉकनी होगा। अच्छा, पहली बात तो अगर Swami वो ji, आप sorry to interrupt. Lock knees नहीं, knock knees. Knock knees बोले वो. नॉकनीज का मतलब क्या है? या तो वो आपस में जुड़ रहे होते हैं। हाँ, जुड़ रहे हैं वो, वही. हाँ हाँ, तो वही हो गया ना, फिर वही हो गया, अच्छा, वो ठीक है. वही बात हो गई। ठीक है ना, अगर तो अच्छा. 16 साल से ऊपर है तब तो अष्टांग चिकित्सा कर सकते हैं। अगर 16 साल से नीचे है ना, तो बच्चों का प्रोग्राम करते हैं, उसमें आ सकते हैं, अष्टांग चिकित्सा में नहीं आ सकते, है ना। तो बच्चों का एक हम प्रोग्राम करते हैं, उसके अंदर ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो गया, या फिर जैसे हम कहते हैं कि डायबिटीज, थायराइड, क्रॉनिक डिजीज हो गया, या फिर इम्यूनिटी वीक है, मेंटल इशू है, एडीएचडी है ना, और ये क्या कहते हैं उसको, कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर टाइप की चीजें भी जो है उसके अंदर हम लोग एड्रेस करते हैं। अगर 16 से ऊपर है तभी ये अष्टांग चिकित्सा कर सकते हैं, उससे नीचे आपको बच्चों का अलग प्रोग्राम आता है। आप नंबर छोड़ जाइए, अगर 16 से कम है तो नंबर छोड़ जाइए, आपको गाइड कर देंगे। Okay. Sushma ma'am writes about BP, thyroid, and muscle pain, headache mostly every day, ankle pain. देखिए, दिस इज अ कॉमन थिंग नाउअडेज। ये बड़ी कॉमन चीज है। आप को आंखें खोलने की जरूरत भी है अभी इस टाइम पे। क्योंकि एक बात बताइए मुझे कि आपको एक प्रॉब्लम आता है और डॉक्टर बोलता है कि ये तो देखो थायराइड का प्रॉब्लम है, लेकिन वो डॉक्टर बोलता है कि ये थायराइड तो ठीक नहीं होता जी। फिर वो थायराइड के बाद में आपको बीपी हो जाता है, फिर वो कहता है कि नहीं जी बीपी हो गया, अब तो ठीक नहीं होता जी, आप ये दवाई खाओ। पर दवाई खाने से तो आपको एक के बाद एक बीमारी आ रही है। एक पहली बात ये कि हम कि कहां तक किस लेवल पे आ गए हैं कि हम उन्हीं के पास जाते हैं जो कहते हैं कि हम तो ठीक नहीं करते जी इस बीमारी को। हम बार बार उसी के पास में जाते हैं और उन्हीं की दवाइयां खा रहे हैं। तो बहुत देखिए, एलोपैथी क्रॉनिक डिजीज में से किसी चीज को ठीक नहीं करता। पहली बात तो ये, मैनेजमेंट की जरूरत अगर है तो थोड़े टाइम के लिए उसको लिया जा सकता। ठीक है, अगर आपका बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बहुत शुगर बढ़ गया, या एक कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गया, उस टाइम पे थोड़ी टाइम के लिए आप दवाई लेके उसको बैलेंस कर सकते हैं। मगर ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी, मैनेजमेंट है। तो ट्रीटमेंट तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, ट्रीटमेंट तो आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म एलोपैथी की वजह से देखिए, 100 साल पहले किसको थायराइड था? 50 साल पहले लीजिए, किसको थायराइड था? 50 साल पहले किसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का इश्यू या हार्ट डिजीज इतना होता था? 100 साल पहले किसको डायबिटीज था?
तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज क्यों हो गया, क्योंकि हम इस शरीर के साथ में ज्यादती कर रहे हैं। हाँ, ये शरीर एक जीवंत सिस्टम है, जीवित सिस्टम है, मगर इसके साथ में हम बहुत ज्यादती करते हैं। कोरोना के सबको हुआ होगा या वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा, तो शरीर का क्या तरीका है ठीक करने का वायरल इन्फेक्शन को? ये टेम्परेचर बढ़ा देता है, फीवर कर देता है, पर हम इसको ठीक नहीं करने देते, हम फीवर कम कर देते हैं, पैरासिटामोल खा के फीवर कम कर देते हैं। उल्टी होती है उल्टी बंद कर देते हैं, दस्त होती है दस्त बंद कर देते हैं, दर्द होता है दर्द बंद कर देते हैं। इस शरीर को हम काम ही नहीं करने देते। तो अगर इतनी ज्यादती शरीर के साथ में करेंगे तो इसके साथ में प्रॉब्लम तो बढ़ती जाएगी, और वो बढ़ती ही जा रही है। डायबिटीज बढ़ता जा रहा है, कितनी दवाइयां खा रहे हैं लोग, डायबिटीज के साथ साथ में मल्टीपल इश्यूज बढ़ता जा रहा है। पहली बात तो ये कि दवाइयां जो है, केमिकल मेडिसिन इज नॉट अ ट्रीटमेंट, दे कैन मैनेज इट फॉर सम टाइम, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता आप लेके मैनेज कर लिया फिर छोड़ दिया, ऐसा फिर भी किया जा सकता है। ऐसा मानने को चलो ठीक है, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी नेचुरल लेके करना चाहिए कुछ, चलो मानने को तैयार है कि उतना कर देंगे, मगर आप तो जिंदगी भर दवाइयां खाने लग गए। ट्रीटमेंट कब करोगे और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट करने का एक ही तरीका है, वापस से बता रहा हूं, ट्रीटमेंट करने का एक ही तरीका है। आपको अपने ऑर्गन फंक्शन वीक हो गया ना, कहते थायराइड ग्लैंड वीक हो गया, पैनक्रियास वीक हो गया, लिवर वीक हो गया, हार्ट वीक हो गया, किडनी वीक हो गया, तो उनको तो मजबूत करना पड़ेगा आपको। और कोई ट्रीटमेंट है क्या? और वो कैसे करेंगे उनको मजबूत? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। किसी को लिवर का इश्यू है ना, किसी को लिवर का इश्यू, चाहे वो हेपेटाइटिस हुआ, चाहे वो सिरोसिस हुआ, चाहे लिवर का कोई और इश्यू अगर है, तो उसके पास जाके ना उसकी सांसों को सुनने की कोशिश करें। क्या करना? सुनने की कोशिश करना। और किसी को किडनी खराब है ना, क्रिएटिनिन लेवल बहुत हाई है या डायलिसिस पे है, उसकी भी सांसें सुने। आपको क्या फर्क नजर आएगा? एक लिवर का पेशेंट जो होता है ना, वो बड़ी लंबी लंबी सांसें छोड़ता है, और एक किडनी का पेशेंट जो होता है ना, लंबी लंबी सांसें खींचता है। वो तो बॉडी तो ठीक करने की कोशिश कर रही है उन ऑर्गन को, मगर आप दवाई खा के उसकी हालत खराब करते जा रहे हैं। तो अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, ये प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं शॉर्ट टाइम में आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लिवर को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसका एक फॉर्मूला है। सपोज कीजिए 5 सेकंड का एक इनहेलेशन होता है, 5 सेकंड का एक यूनिट मान लेते हैं, यूनिट। तो 5 सेकंड इनहेलेशन, 5 सेकंड होल्ड, रोक लीजिए सांस को, और 20 सेकंड का एक्सहेलेशन करें। जब ये करेंगे, जो कि बॉडी खुद करने की कोशिश कर रहा है, जब ये करेंगे तो आपका लिवर ठीक होना शुरू हो जाएगा। किडनी के लिए क्या करें? 20 सेकंड का इनहेलेशन करना पड़ेगा, 10 सेकंड का होल्ड करना, रोकना पड़ेगा, 5 सेकंड का एक्सहेलेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपका किडनी ठीक होना शुरू होगा। मगर एक बात ध्यान दीजिए, केवल एक ऑर्गन अपने आप में काम नहीं करता। आपका किडनी आपके लिवर के बगैर काम नहीं करता, आपका लिवर हार्ट के बगैर काम नहीं करता, आपका हार्ट आपके थायराइड के बगैर काम नहीं करता। इस तरीके की चीजें सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक होलिस्टिक मेथड चाहिए, तरीका चाहिए आपके पूरे शरीर को ठीक करने का। इसीलिए हम ये अष्टांग चिकित्सा पूरा प्रोग्राम मॉड्यूल क्या है कि एक तो आपको जो कहां से शुरुआत हुई प्रॉब्लम, वो हम डायग्नोस करेंगे, एनालिसिस करके वो डायग्नोस करेंगे, भाई यहां से शुरुआत। आपको सिखाएंगे एक मॉड्यूल, और उसके हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर देंगे कि आपका कोर इशू भी एड्रेस हो और आपका पूरा का पूरा सिस्टम भी एड्रेस हो, दोनों चीजें एड्रेस होनी चाहिए। इसीलिए ये एक गाइडेड प्रोग्राम है। तो ट्रीटमेंट आपको शुरू करना पड़ेगा। अभी सोच रहे हैं दवाई खा के कोई ट्रीटमेंट, तो दवाई खा के नहीं होता ट्रीटमेंट। पिछले 50 से 100 साल का रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, गूगल में जाके देख लीजिए कौन सी बीमारी कम हो रही है। कोई भी बीमारी कम नहीं हो रही। अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छा करना है तो अपने ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने षड्बलों को स्थापित करना पड़ेगा, आपका रीजनरेशन, ये मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना पड़ेगा। दवाई से मेटाबॉलिज्म इंप्रूव नहीं होता। और जेनेटिक स्ट्रेंथनिंग भी करनी पड़ेगी। अगर कुंभक करेंगे तो आपका जेनेटिक्स चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो जेनेटिक डेविएशन कर दिया हमने दवाइयों से, वो ठीक हो जाएगा। Okay, next question is from Y Santoshi ma'am. My son had undergone spinal cord surgery. He still has drop foot.
Is it possible to fix this issue? Yes, yes, a drop foot. We have many examples where drop foot has been fixed, but you'll have to see that your son is above 16. And then only will take your son. Otherwise, he'll be directed to another program which is for kids. So Santoshi ma'am, please leave your name and number. We can guide you accordingly in the webinar group. Jayashree ma'am is writing about being suffering from rheumatoid arthritis past 11 years and taken steroids and painkillers. पहली बात तो देखिए पेन किलर्स, मैं आपको थोड़ा सा, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, प्लीज इफ यू आर रियली सीरियस, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेकिंग, है ना। आप कोई भी चीज खाते हैं तो आप अपने हिसाब से पहले चेक कर लेते हैं ना कि हाँ ये मेरे लायक है, मेरे टेस्ट के हिसाब से है, सही है मेरे लिए। तो कोई भी चीज आप जो ले रहे हैं उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको सही जानकारी मिलेगी तभी आप कोई सही निर्णय ले पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे अपने जीवन में। तो पहली बात ये कि जितने भी पेन किलर्स हैं उन्हें कहते हैं हम NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है ज्वलनशीलता, जलन, ठीक है। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताऊं, आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होता ही होता। जैसे कि आप अगर खरोच लगा देंगे तो जलन होगी, वो इन्फ्लेमेशन है। आप अगर केमिकल डाल देंगे स्किन पे, कोई खराब चीज डाल देंगे तो वो एसिड जैसी कोई चीज, तो जलन होगी, वो इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन के टाइम पे ये आपके शरीर का तरीका है बताने का। इन्फ्लेमेशन में एक प्रोस्टाग्लैंडिन कॉम्प्लेक्स, एक केमिकल है, वो रिलीज होता है। उसकी वजह से आपके शरीर को पता चलता है कि यहां इन्फ्लेमेशन है, इसको मुझे ठीक करना है। तो आप जो दर्द की दवाई खाते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है, यानी उसको बंद कर देगा। पहली बात, यानी कि आपके शरीर को पता नहीं लगने देगा कि यहां पे प्रॉब्लम है, और आपका शरीर ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मुझे क्या ठीक करना है। तो आपने अपने शरीर के साथ में कुछ ज्यादती, कुछ गलत काम कर दिया। दूसरी चीज जो आप लेते हैं वो होते हैं, जब कोई चीज काम नहीं करती तो स्टेरॉइड ले लेते हैं। स्टेरॉइड आपकी इम्यूनिटी को दबा देता है, यानी आपकी इम्यूनिटी की वजह से आपका दर्द जो है ना वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। पहले आपने दर्द की दवाइयां खाई, वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को खराब कर दिया, अब वो काम नहीं कर रहा तो आप स्टेरॉइड दे दिया, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी भी काम नहीं कर पाए, अब आपकी इम्यूनिटी को दबा दिया गया। मत क्या कर रहे हैं आप, शरीर को टॉर्चर कर रहे हैं। और ये 1 साल का काम नहीं होता, ये बचपन से हम कर रहे हैं। बचपन से जब एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, कितने केमिकल डाले उसके अंदर, पूरा का पूरा एक वैक्सीनेशन का, इम्यूनाइजेशन का चार्ट मिलता है ना आपको। तो आप तो शरीर को एक छोटे 2 केजी के, 2 किलो के इन्फेंट के साथ में भी टॉर्चर शुरू कर दिया, और फिर सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा। क्या स्टीरॉइड से ठीक हो जाएगा? डोजेज बढ़ता जाएगा, ठीक तो कभी नहीं होने वाला। दिखना खराब हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा, 100% गारंटी है, क्योंकि ये सब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के साथ छेड़छाड़ करते हैं आपके शरीर के। क्या होगा स्टेरॉइड खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा। मेटाबॉलिज्म खराब होगा, आपको कैंसर का अटैक कर दिया जाएगा एक टाइम के बाद में। अगर चेक कराएंगे तो पता चलेगा, क्यों, कैंसर का कोई टेस्ट नहीं होता, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का टेस्ट होता है वो। तो अब ये सब चीजें टेक्निकली बोलने में कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि देखिए लंबे समय तक अगर आपने अपने शरीर के साथ में टॉर्चर किया तो क्या उसको मौका देना नहीं चाहिए एक बार कि रिकवरी, उसका रिकवरी फैक्टर जो है उसको स्ट्रांग किया जाए, वो अपने आप को ठीक करने का जो इसका सिस्टम है उसको ठीक किया जाए। क्या ये करना नहीं चाहिए हमें? ये इसके अलावा क्या चारा है मुझे ये बता दीजिए ना। ठीक तो होने नहीं वाला, आप स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म लेंगे तो बस क्रैश, उसके बाद बिस्तर पे पड़ जाएंगे, फिर आईसीयू में, उसके बाद में पता नहीं क्या कोई भी ठीक हुआ। एक एग्जांपल बता दो ना, एक एग्जांपल बता दो कि ऐसे लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड लेके कोई भी ठीक हुआ है आज तक। ऑर्गन फेल हो जाएगा फिर बाद में चल के, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ये सब क्योंकि उनके पास ट्रीटमेंट नहीं है, तो उनके पास जो है वही कर रहे हैं। पर गलती तो हमारी भी है ना, गलती तो हमारी भी है, क्योंकि वो कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी हम उन्हीं के पास में जाते हैं। कहते हैं डायबिटीज ठीक नहीं होता, फिर भी वो दवाइयां खाना हमारे को शौक है बहुत, सुबह शाम। कहते हैं थायराइड ठीक नहीं होता, मगर सुबह उठ के सबसे पहले अरे मेरी दवाई चाहिए। कहते हैं ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता, फिर भी हम ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं। हार्ट डिजीज ठीक नहीं होता, एक स्टेंट लगाते हैं, दूसरा लग जाता है, तीसरा लग जाता है, हार्ट की एज कम हो जाती है।
आप मुझे बताइए तो सही, ये कि हम क्या कर रहे हैं, और अल्टीमेटली सफर कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? आप जब आईसीयू में लैंड कर जाएंगे तो जिम्मेदारी कौन लेने वाला? आपके घर वाले, जो रोज कहते हैं अरे डॉक्टर के पास जाओ, छोटी से छोटी प्रॉब्लम में कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ, जिसके पास ट्रीटमेंट ही नहीं है उसी के पास भेज रहे हैं। तो कहीं तो हमें एक होश में आना पड़ेगा भाई। मैनेजमेंट के लिए चलो ठीक है, आपने बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, मैनेज करने के लिए मेडिसिन ले, समझ में आती है बात, मगर ट्रीटमेंट के लिए आप क्यों जा रहे हैं? वो तो आपको कुछ और ढूंढना चाहिए। तो क्या आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं? अगर आपने बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड लिया है, मैं उसके बाद भी आपको एक बात बताता हूं कि आप इससे फिर भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा और आपको अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा, फिर भी आप इससे बाहर आ सकते हैं। टाइम लंबा लगेगा। मैं आपको एक डील देता हूं, 3 साल अपने ऊपर काम कीजिए और कोई भी बीमारी से निकल जाएंगे। क्या डील अच्छी है? नहीं, 3 साल तो बहुत ज्यादा होता है। तो ठीक है, फिर आप जीवन भर बीमार रहे, 2 ही ऑप्शन है आपके पास में, या तो काम करके ठीक हो जाए, अपने शरीर को ठीक कर लें, या जीवन भर बीमार रहें और प्रॉब्लम प्रोग्रेसिव होती जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है स्टैग्नेंट रहती है, हमेशा प्रोग्रेसिव होती है। डायबिटीज हुई, आपका डोसेज 1 दवाई 2 दवाई 3 दवाई पता नहीं, फिर बीपी, हार्ट डिजीज, किडनी खराब हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या। आपको तो शायद याद भी नहीं रहेगा कि कितनी प्रॉब्लम। प्रोग्रेसिव होता है, यानी या तो आप अपने आप को खराब कर रहे हैं या तो ठीक कर रहे हैं, आप एक जगह नहीं टिकते। तो या तो ठीक कीजिए अपने आप को, या तो खराब करते जाएं, वो आपकी चॉइस है। तो स्टेरॉइड जो है वो बहुत अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में हफ्ता ले लिया, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ले लिया, फिर बंद कर दिया, बस उतना ही किया जा सकता है। उससे ज्यादा प्रॉब्लम है स्टेरॉइड के साथ में, वो आपके शरीर का सत्यानाश कर दे। तो ट्रीटमेंट आप दूसरी जगह भी ढूंढें। मैं तो कहूंगा कि कहीं भी आयुर्वेदाचार्य के पास में भी चले जाया करो, वैद्य के पास में चले जाओ, नेचुरोपैथी में ट्राई करो कुछ, पंचकर्मा में ट्राई करो कुछ। उसको तो हमने बढ़ावा ही नहीं दिया। अगर उसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अभी नहीं है, जब अनलेस एंड अनटिल वी पुट आवर एफर्ट एंड मनी देयर, उसमें रिसर्च कैसे होगा, उसमें आगे कैसे बढ़ाएंगे? कम से कम वो नुकसान तो नहीं करता। अगर उसको हम फास्ट बना दें तो हमारे लिए ही फायदा है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, अपने शरीर की शक्ति को खत्म करने से कुछ भी नहीं होने वाला। अपने शरीर की शक्ति को, रिकवरी फैक्टर को, इम्यूनिटी को, रेजिलियंस को बढ़ाने से ही ठीक होगा, वही कुंभक करता है। Okay, so actually there was a question yesterday in the webinar. So Sweetie Bagga ma'am, please unmute yourself and you can ask your question directly to Swamiji. Sweetie नमस्कार Bagga ma'am. स्वामी। यस, नमस्कार हाँ। स्वामी जी। नमस्कार। मैं स्वीटी बग्गा हैदराबाद से बोल रही हूँ जी। मेरा एक्सीडेंट हुआ है 40 साल पहले और मेरे रीढ़ की हड्डी टूट गई है। 40 साल से मैं व्हीलचेयर पे बैठी हुई हूँ। तो भगवान की कृपा से अपने आप, मतलब भगवान की दया से ठीक हूँ। मुझे लोअर लिम्स पैरालाइज्ड हो गए, बोथ द लोअर लिम्स आर पैरालाइज्ड, दे आर नॉट वर्किंग, जहां पर से इंजरी हुई है। और नो बावल, नो ब्लैडर सेंसेशन। Every 4 hours or 3 hours डिपेंडिंग ऑन द इनटेक, पाइप डाल के, कैथेटर डाल के यूरिन ड्रेन करना पड़ता है। एंड मोशन के लिए डिजिटली इवैक्यूएट करना होता है। तो ये बार बार डिजिटली इवैक्यूएशन से, स्ट्रेन करने से, कॉन्स्टिपेशन से थोड़ा सा रेक्टम प्रोलैप्स हो गया है। अब मैं एनिमा लेना शुरू कर दी, वाटर एनिमा। और दूसरा, इतने साल तो ठीक से गुजर गए। अभी जो है एवरी, जैसे 4-4 घंटे में यूरिन ड्रेन करती थी। कहीं बाहर जाना होता है तो मैं पानी कम पीती थी, तो 6 घंटे तक आई कुड, मतलब ब्लैडर यूरिन होल्ड कर लेता था। एक टैबलेट लेनी होती है सुबह। तो अभी जो है मुझे लीकेजेस बहुत ज्यादा हो गए। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने टेस्ट किया और बताया कि आपका ब्लैडर, जो ब्लैडर है वो बहुत थिक हो चुका है। It is not able to hold more than 200 ml यूरिन। तो जैसे ही 200 होता है वो लीक हो जा रहा है।
तो इसके लिए उन्होंने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी, तो आई एम अगेन सर्जरी। तो मैंने फिलहाल कुछ नहीं किया, 1-2 साल से ये मेजर प्रॉब्लम है। बाकी 40 साल से तो लोअर लिम्स पैरालाइज्ड है, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं आपको फ्रैंकली बोल रही हूँ कि जैसे समझो आधा मरा हिस्सा उठा के चलने के जीने के समान है, आधा हिस्सा ऐसे ही उठा के जी रही हूँ। तो हाथों के बल में, हाथों से ताकत, रिहैबिलिटेशन लेके हाथों के बल से आगे पीछे होती हूँ, व्हीलचेयर पे बैठना है, मतलब हमको ट्रेनिंग ऐसे दी गई, हाथों के बल से अपना काम हम बैठ से चेयर पे बैठ जाते हैं, हाथों के बल से पैर उठा के कपड़े पहन लेते हैं, सब अपना काम 60-70% 80% अपना काम खुद कर लेती हूँ। अब मेरी एज 60 इयर्स होने को आई है, जब मैं 20 साल की थी तब से मेरा ये कंडीशन है। तो तब मैंने पूरे ट्रीटमेंट्स कर दिए, किसी से कुछ आराम नहीं आया, तो हमने सोचा बस अब कुछ भी ट्रीटमेंट, हम लोग कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। इसका क्या कुछ इलाज हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का? Swami हेलो, ji, आवाज please आवाज unmute नहीं आ yourself. रही है। आई एम नॉट, आई कांट हियर। मैं कह रहा हूं आपको कि आपको क्या लगता है कि इसका एक्चुअली में इलाज है क्या? आपने मतलब अभी तक जो भी किया ना, अकॉर्डिंग टू एलोपैथी तो कुछ इलाज नहीं है। नहीं नहीं, और क्योंकि अभी तक जो आपने किया ना, वो इलाज तो नहीं था। जी देखो, न्यूरो रीजनरेशन ही इलाज था ना इसका। जी अगर जो स्पाइन कहीं पे टूट गया और उसकी हाँ वजह जी से जो मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो उसमें सेंसेशन है ही नहीं, या सेंसेशन जी ट्रैवल नहीं कर, या फिर वो ब्रेक डाउन हो बिल्कुल गया, तो जी न्यूरो रीजनरेशन ही इलाज है ना। हाँ जी। तो न्यूरो रीजनरेशन के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं। मतलब कभी सुना ही नहीं था ना, जैसे हार्ट का रीजनरेशन वाल्व्स का, पहले ये भी नहीं सुना था, पर अब कुछ हाँ सालों से सुन रहे हैं कि हार्ट का हाँ, अगर वाल्व बंद हो गया है तो वो अपने आप दूसरा रास्ता खोज के निकल जाता है, हमको स्टंट निकल करने जाता की है, जरूरत नहीं बिल्कुल है। निकल जाता है, बिल्कुल निकल हाँ। जाता है, और न्यूरो रीजनरेशन भी होता है। अब ओके। प्लास्टिसिटी के बारे में अगर आप पढ़ लीजिए तो पता चलेगा, न्यूरो रीजनरेशन तो होता ही है। प्रॉब्लम जी ये है कि किसी ने सोच लिया कि ऐसा नहीं होता है और उसने दुनिया को जबरदस्ती ये समझाने की कोशिश की। तो प्रॉब्लम हमारे साथ में भी है कि हम ट्रीटमेंट तो करते ही नहीं है, फिर सोचते हैं कि, और देखिए एज के साथ में ये कोई सुधार तो आएगा नहीं, एज के साथ बल्कि में तो रीजनरेट ही होगा ना। हाँ, सिचुएशन तो और खराब होती जाएगी ना। जी मगर आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, क्या अगर यूरिनरी ब्लैडर का वॉल जो है थिक हो गया, क्या वो थिन हो सकता है? क्या न्यूरो रीजनरेशन हो सकता है? आई एम जस्ट आंसरिंग द कोर क्वेश्चन। क्या जी न्यूरो आई हैव नो रीजनरेशन हो आइडिया। सकता है? 100% हो सकता है। हमने ये देखा है कि कुंभक करने के बाद में जिनका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता था, जो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, कंट्रोल करने लग गए। हमने पर ये मेरा ये देखा है, प्रॉब्लम है कि जी जी हाँ, हमने ये देखा है कि अगर अगर कोलोन का प्रोलैप्स होता है, तो अगर वो उनको एक प्रोसेस हम देते हैं तो ठीक हो जाता है वो। हमने ये देखा है कि किसी को अगर पैरालिसिस हो गया है तो उसका सेंसेशन वापस, न्यूरो रीजनरेशन वापस आ जाता है, ड्रॉप फुट ठीक हो जाता है, माइस्थीनिया ग्रेविस ठीक हो जाता है। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अपना ट्रीटमेंट तो किया ही नहीं, आपने केवल मैनेजमेंट किया, क्योंकि किसी ने बोला कि यही होता है जी, जी यही कर सकते हैं जी, तो आपने केवल मैनेजमेंट किया, उसमें आपकी गलती नहीं जी है। लेकिन हम पूरे सोशल स्ट्रक्चर में क्या, लोगों की माइंडसेट में क्या डाल रहे हैं, ये हमको देख के चलना पड़ेगा। तो अभी भी आपकी हालत जो सिचुएशन है उससे बहुत बेहतर हो सकती है। मैं आपको एक बात पर बताऊं, मुझे जो सिचुएशन है उससे बहुत बेहतर हो सकती है, जी पर और मुझे काफी चीजें बाउल आपके ब्लैडर कंट्रोल में का आ पता सकती। ही, बाउल और हम्म, ब्लैडर का पता ही नहीं चलता है ना, जैसे आप बोलते हैं यूरिनेशन रोक सकते हैं, पता ही नहीं देखिए, चलता है ना कि कब आ हाँ, रहा है वो तो कब नहीं पता, आ रहा है। वो पता नहीं चलता, वो तो ठीक है, वो तो बात होगी, पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि सेंसेशन अभी है ही नहीं, कि न्यूरो न्यूरो जी मोटर न्यूरॉन्स वहां पे जो सेंसेशन लेके जा नहीं पा रहे। हाँ, वो जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन
लेकिन अगर आपका हम मेटाबॉलिज्म अच्छा करते हैं, रीजनरेशन कैपेसिटी आपकी बॉडी की बढ़ा दें, तो कुछ हद जी तक अगर रीजनरेशन होना शुरू हो जाए तो कुछ सेंसेशन तो आना शुरू हो जाएगा। वो इट विल टेक टाइम। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर उस समय हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते तो शायद ये बहुत जल्दी हो जाता ठीक। आज के टाइम पे अभी मैंने डील दिया ना, मैंने कहा कि हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए, बट आपकी सिचुएशन अभी से तो बहुत बेहतर हो सकती है। आपको जी ऐसा भी मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे बहुत चांसेस हैं कि आपको सेंसेशन किसी हद तक तो वापस आ जाएंगे, और पर उस समय अगर डैमेज आप, हाँ, आगे की लाइफ जो स्पाइनल हो जाएगी ना अभी के मुकाबले में स्पाइनल बहुत बेहतर। स्पाइनल कॉर्ड अगर कट हो गया है तो रीजनरेट होगा। जैसे पैरालिसिस में क्या, स्ट्रोक में कोई क्लॉटिंग होती है, कुछ होता है, वो निकल जाता है, तो वहां पर मुझे एक बात, रीजनरेशन हो सकती है। मुझे बताइए ना, ये रीजनरेशन कहाँ कहाँ नहीं होता? अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कट आता है तो क्या वहां पर रीजनरेशन नहीं होता? यहां तक कि गर्दन कट जाती है लोगों की, उसके बाद भी उसमें रीजनरेशन हो जाता है अगर वो कुछ समय तक सही रखें, और अगर एफर्ट सही, रीजनरेटिव कैपेसिटी आपकी बॉडी की बढ़ा दें, रीजनरेटिव जी स्ट्रेंथ बढ़ा दें, तो वो काफी हद तक ठीक हो जाता है। मे बी देयर विल बी अ लिटिल डिफॉर्मिटी, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होगा ना, बाकी तो ठीक हो जाएगा। जी जी आप सोच रहे हैं स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी मेरी ठीक नहीं हो सकती, मैं कह रहा हूं कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी को रहने दो ना। जी अगर आप सेंसेशन वापस आ जाए तो क्या ठीक नहीं हो जाएगा? आप सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर आपका। केवल यही तो है थोड़ा कि चलने में या बैठे में जो आपको स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी थी वो एकदम से पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी, पर परेशानी तो ठीक हो जाएगी। मैं आपके तो अब आगे की लाइफ चलना तो भी नहीं ठीक है। चाहती हूँ। मैं अब चलना भी नहीं चाहती हूँ, सोच भी नहीं सकती और चलना भी नहीं चाहती, क्योंकि ना मुझे जैसे इतने हेमरॉइड्स हुए जब मोशन पास करके आती हूँ। ये तो मतलब मेरी सिस्टर ने देखा हेमरॉइड्स, तो हम लोग वो बोलते हैं कि ऐसे हेमरॉइड्स कोई और होता ना, दर्द से कितना तड़पते थे। अब नहीं, पैरों में बिल्कुल की सही। हो सकता है आर्थराइटिस हो गया होगा, क्या क्या बीमारियां पैरों में हो गई होंगी पता नहीं। सेंसेशन आ जाएगा तो वो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़ेंगे। बहुत चिंता देखिए होती है अभी आपको, आपके। मुझे एक बात बताइए ना, आप अगर आज के टाइम पे 10 प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर मैं कहूं कि कल को जाके आप केवल 2 ही प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो क्या वो आपको नहीं हम्म, करना चाहिए? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो 10 की जगह 12 ही होने वाला जी है ना? तो उस तरफ तो हाँ काम करना ही चाहिए। जी इसीलिए कह रहा हूं, शरीर को आप अ, बहुत अब्यूज कर दिया। अब कम से कम इतना तो करें कि कंफर्टेबली थोड़ा आगे की लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, जी। है ना? उतना तो हम कर सकते हैं। तो ठीक है, आपके रीजनरेशन हिसाब से होता है, ये न्यूरो रीजनरेशन होता हो है, सकता है। न्यूरो रीजनरेशन होता है। आपका मेटाबॉलिज्म भी वीक है, वो भी ठीक हो जाएगा। ऑर्गन फंक्शन अगर ठीक हो जाते हैं तो आप इसी बॉडी के अंदर काफी कंफर्टेबल हो सकते हैं। मैं आपको ये अब बताने की कोशिश। कोई भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट आपके पास आया हुआ जो ठीक हुआ, जिसका रिव्यू पढ़ने से मेरा मोराल और बूस्ट होगा? आपकी बातें सुन के हिम्मत तो आ रही है, पर अगर ऐसा एक है पेशेंट को देखे ना ऐसा तो स्पाइनल अपनी कॉर्ड को हिम्मत और बढ़ इशू को जाती है। लेके ऐसा स्पाइनल कॉर्ड के इशू को लेके काफी पेशेंट हमारे पास में, मतलब स्पाइनल कॉर्ड का इशू एक्चुअली सभी न्यूरो प्रॉब्लम में स्पाइनल कॉर्ड का इशू होता ही है। आपको ऐसा लगता है कि केवल किसी का एक्सीडेंट हुआ हो उसी का मैं देखना चाहती हूँ, तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ शायद मेरी नजर में तो नहीं है, मगर हाँ, स्पाइनल कॉर्ड के, स्लिप डिस्क के और न्यूरो की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा ही, क्योंकि आपकी पूरी नस जो है स्पाइनल कॉर्ड में ही जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड का इश्यू होता ही है, और उसमें बहुत इंप्रूवमेंट, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने इंप्रूवमेंट देखा है, उन लोगों को बहुत इंप्रूवमेंट मिला है। बाकी कोई रिव्यू पढ़ना, डाउट होना कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप दैट इज अप टू यू, आप डिसाइड कीजिए आपको करना है कि नहीं करना। हम किसी को बोलते नहीं है कि आप आइए और कीजिए, आप डिसाइड कीजिए, हमने सब कुछ आपको खोल के बता दिया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड Okay, स्वामी जी, ये जो दूसरे जो और भी लोग हैं ना, स्लिप डिस्क। आप अपना नंबर छोड़ जाइए, कोई मेंटर आपसे बात कर लेगा और दूसरे ओके क्वेश्चन ओके, हम लेंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। okay. Okay, Mukta ma'am talks about, I have some emotional issues along with sciatica and hip pain in my right leg because of a previous injury.
which was okay until last year. मुझे एक चीज आपको बताना है और इसको क्लियर कर दीजिए कि इफ यू हैव अ फिजिकल प्रॉब्लम यू हैव अ मेंटल प्रॉब्लम। आपको टैग नहीं किया गया, आपको केवल ये ना लिखा नहीं है कि आपको ये मेंटल इश्यू है, बस इतनी सी बात है। फिजिकल इश्यू आपको है तो मेंटल इश्यू है ही है आपको। तो सबसे पहली चीज कुंभक करने से क्या चीज ठीक होती है? जैसे ही आपके फोर्सेस फैक्टर्स बॉडी के ठीक होते हैं, सबसे पहली चीज आपका मेंटल इश्यू ठीक होता है। 100% ठीक होगा वो, ये बात आप समझ जाइए। सभी को, जिसको भी फिजिकल डिजीज है, जिसको भी क्रॉनिक डिजीज है, उसको मेंटल इश्यू है ही है। आप गारंटी है ये। लेकिन आपको लगता है कि मेंटल इश्यू केवल वो नाम डालने से मेंटल इश्यू होता है, नहीं। मेंटल इश्यू, एलोपैथी को मेंटल इश्यू के बारे में एबीसी भी नहीं मालूम। केवल आप यही सुनना चाहते हैं कि एलोपैथी ने कुछ कह दिया तभी हम मानेंगे, तो उस बात से निकल जाइए। एलोपैथी को क्रॉनिक डिजीज के बारे में ही नहीं मालूम तो मेंटल इश्यूज के बारे में तो कुछ भी नहीं मालूम। दूसरी बात, मेंटल इश्यू के लिए कोई दवाई नहीं काम करती है। आप प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे, आपको लगेगा कि मुझे कुछ रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ तो एक अल्कोहल पीने के बाद में मिल जाएगा, स्मोक करने के बाद में भी मिल जाएगा, मगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती। यहां तक कि इवन एडिक्शन भी जो है वो एक मेंटल इशू ही होता है। तो क्या आप इसको ठीक करना चाहते हैं? तो आपको कुंभक करना पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं। मैं साफ बोल रहा हूं आपको। बाकी फिजिकल प्रॉब्लम जो भी है आपको, वो तो ठीक होगा ही होगा, मगर मेंटल इशू बहुत मेजर प्रॉब्लम है। दुनिया में हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, मेंटल इशू एपिडेमिक हो गया है। एपिडेमिक हो गया, जैसे कोरोना एपिडेमिक था ना, मेंटल इशू एपिडेमिक है। और ये 100% ठीक हो जाता है कुंभक से। तो प्लीज हेल्प योरसेल्फ। नेक्स्ट। Okay, Anuradha ma'am talks about want to know that autoimmune disorder can be treated without medicine. हाँ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत आसानी से ठीक होता है। देखिए, व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको इसको समझना पड़ेगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्या है। इसको मैं कई तरीके से समझा सकता हूं, बट बात यह है ना कि अगर मैं बहुत ज्यादा समझाने लग जाऊं तो यूनिवर्सिटी क्लास बन जाएगी। आपको तो वो बनना नहीं है ना, डॉक्टर बनना है क्या? आपको तो ठीक होना है ना। और कितना भी आपने गूगल में देखा कितना ज्ञान है, सारा ज्ञान दिमाग में भर लो तब भी ठीक नहीं होंगे। ट्राई करके देखिए, सारा ज्ञान गूगल का ले लीजिए, देखिए दुनिया कितनी ज्ञानी हो गई कि सब बीमार हो गए। जितना ज्ञान उतनी बीमारी। तो पहली बात ये कि बहुत ज्ञान से सॉल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि हम बहुत गलत जगह चले जाते हैं। और ज्ञानी लोग वैसे ही बेवकूफ, मतलब पढ़े लिखे लोग इतने समझदार होते नहीं। रीजनरेशन डीजनरेशन के बीच में जो इम्बैलेंस आता है उसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। एक तरीका बता रहा हूं समझाने का, और भी तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं। मैं 1000 तरीके से आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर समझा सकता हूं, और मैं आपको सिर्फ ये बताना की कोशिश कर रहा हूं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत आसानी से ठीक होता, बहुत आसानी से। सुबह होगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, शाम को ठीक हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल रीजनरेशन डीजनरेशन के हिसाब से मैं एग्जांपल देता हूं और आपके साथ में कनेक्ट करके बताऊंगा। सपोज कीजिए कि आप एक जगह से गुजर रहे हैं जहां बहुत धुआं है, बहुत कोई चीज जल रही है और बहुत धुआं निकल रहा है। तो आप सांस ज्यादा लेंगे कम लेंगे? आप ऑब्वियसली सांस कम लेंगे, ठीक है। अच्छा, आप सांस कम लेंगे, आपकी सांस जो जितनी खींचने की क्षमता होती है ना, जितना लेते हैं, उससे आपके शरीर में रीजनरेशन होता है। और डिटॉक्स कैसे होता है? सांस छोड़ने की क्षमता से डिटॉक्स होता है ना। इसका एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए आपके शरीर में। लेकिन क्या हमने एनवायरनमेंट खराब कर दिया? अगर हमने एनवायरनमेंट खराब कर दिया है तो आपकी बॉडी वैसे ही सांस कम ले रही है, आपको शायद पता ही नहीं है। अगर हमने एनवायरनमेंट पोल्यूट कर दिया है तो आपका शरीर तो समझदार है, वो तो एनवायरनमेंट के साथ में कनेक्टेड है, आपको वातावरण के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वो तो वैसे ही सांस कम ले रहा है। तो रीजनरेशन कैपेसिटी आपके बॉडी की वैसे ही कम है, डीजनरेशन का स्ट्रेंथ नहीं है। ये दोनों चीजों का इंबैलेंस जैसे ही आपके शरीर में होगा, इसी को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है
ठीक है, जैसे मैंने बताया कि बॉडी का जो वर्किंग फंक्शनल मैकेनिज्म है, तरीका है काम करने का, उसको हमने डिवेट कर दिया। केमिकल लेके, दवाई खाके, खराब भोजन लेके, तो उसकी वजह से आपका शरीर रिस्पांस का मैकेनिज्म, आपके शरीर का कैसे वो अपने आप को संभाले, वो कंफ्यूज हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्यूनिटी कंफ्यूज हो गई, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, अच्छा, इसको ठीक करने के लिए आपकी सांसों के साथ में मैं आप एक्सपेरिमेंट करें, जैसे एक एग्जांपल मैंने पहले भी बताया, आपकी कोशिश करें कि अगर सारी चीजें आपके शरीर को खराब कर रही हैं और बॉडी का रिस्पांस कमजोर है, तो इसको स्ट्रांग कैसे किया जाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग कैसे किया जाएगा। तो आप देखिए कि कोई आपको धक्का देता है तो आपको धक्का देने की क्षमता कितनी है, यही मैंने बताया ना, आपकी सांस रोकने की क्षमता जितनी होगी उतना आप वापस धक्का दे पाएंगे, यही बताया मैंने आपको। तो वही आपकी इम्यूनिटी, जो कि एक सामने से धक्का आ रहा है उसको पुश करना, वही आपकी इम्यूनिटी का फोर्स है ना। तो आपकी सांस रोकने की जितनी क्षमता होगी उतनी ही आपके बॉडी में इम्यूनिटी होती है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए आपको इम्यूनिटी को क्लियर करना होगा, इम्यूनिटी के फैक्टर को मजबूत करना होगा जो हमने कमजोर कर दिया। और वो कैसे मजबूत कर पाएंगे, वो सांस रोकने की क्षमता जब बढ़ाएंगे, जिसे कहते हैं कुंभक, एक तरीके से, इसका एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, इसलिए हम कोर्स करवा रहे हैं ना। तो अगर उस प्रोसीजर से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी इम्यूनिटी फैक्टर स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ही आपका इम्यूनिटी फैक्टर स्ट्रांग होता है, आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तब वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है। अगर वो फैक्टर स्ट्रांग हो जाएगा तो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। इसको आयुर्वेद में भी एक टर्म से कहा जाता है व्याधि क्षमत्व, और कुंभक जो है व्याधि क्षमत्व बढ़ाता है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपका करेक्ट हो जाएगा। Okay, anybody from the एक लास्ट क्वेश्चन। Okay, anybody from the participants who would who would like to ask their questions, I have unmuted you. स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। स्वामी जी मुझे जानना था कि न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम के साथ अंडरलाइंग प्रॉब्लम होगा, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, तो एक ही कोर्स में सब हो जाएगा, एक ही कुंभक प्रैक्टिस से सब हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे ना तो बाकी चीजें भी एड्रेस होंगी, ठीक है ना। और अगर कुछ रह गया तो हम आपको उसके बारे में बता देंगे कि उसको कैसे एड्रेस करना है ना। तो अगर साथ एक जगह से करेंगे ना तो काफी प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाती हैं, है ना, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके ओके, धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। आप लोगों का वेबिनार ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। Thank you so much, everybody, for joining the webinar. Which is the last date for payment? Ma'am, could you just tell us which is the last date for the payment? See, the discounted rate is till tomorrow, 12 p.m. 12 p.m. So after, yes. No, it's till Okay. Saturday 12:30 p.m. It's Saturday till 12:30 p.m. Not tomorrow. Okay, till Saturday. And this Yes, is yes. for the discount payment is for the whole course? Yes, it's for the whole course. Due to Easter Friday, we've extended it till Saturday. Okay, fine. Thank you. Thank you so much. How many months Good it will night. take, ma'am? Pardon Hello? me? Yes. And Yeah, what how many is months? sorry, what is the The session? duration of the course? Like everyone is getting, ma'am, just a minute. Ma'am, is every person getting attention itself? Or it's a group program? Ma'am, Session. it is a group program, but everybody gets attention because we've got a team of mentors who are, taking care of the participants. And if the number of participants are more, we divide the group so that the mentors can exactly see what the participants are doing. And it's a And very basically it's just a exercise, or some medicines are given also. No medicines, no? no medicines are given per se, but only kriyas are mandatory. We do tell you to eat certain things like ghee and all, but that is not mandatory. That is up to Okay. you whether you would like to take it or not.
But the most important thing is that you have to do the kriyas every day. So if you are dedicated enough, you must join the session. Without Okay, doing the fine. kriyas, you cannot And get ma'am, out what of your about the comfort. timings? You have the morning sessions also? Right now, we do not have any morning sessions. We just have evening sessions. But you can write in the webinar group. So as and when we do have a morning session, we can come back to you. It will be Right. for I just 90 minutes. It is I 60 just to want 90 minutes approx, because it depends on the question and answer. And there is, as I told you, there is a varied age group. So people have some net connections or some questions to ask. So it varies between 60 to 90 minutes. Thank you. Thank you. I would Okay, just want thank to know, you, thank you. Thank you. Rachna ji, since I'm paralyzed, lower limbs are paralyzed, I won't be able to do any kriyas now. So Okay. how will that help me? I won't be able to, I won't be able to do actively anything. Maybe I can ask somebody to do, but I cannot do anything. It will be fully passive. I मैम cannot do anything. आप एक चीज है ना, जब कुंभक थेरेपी जो है ना, जब तक आप सांस ले रहे हो, आप कुंभक थेरेपी तो कर ही सकते हो. And once your system starts rejuvenating, you can start doing the other kriyas as well. तो आप जैसे बहुत सारे लोग हमारे सेशंस में ज्वाइन करते हैं, तो हम उन लोगों को यही बोलते हैं कि आप जो मूवमेंट्स नहीं कर पा रहे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुंभक थेरेपी करिए. सांस रोकने की टेक्निक का जो हम लोग बताते हैं, आप उसको ध्यान से करिए. उससे आपका जब रिजुविनेशन शुरू होगा, उसके बाद आप एक स्टेज पे आएंगे जब आप मूवमेंट्स कर सकेंगे, तब आप करिएगा. नाउ दैट कैन वेरी, बिकॉज सी यू हैड इट सिंस 40 years. तो आप ऐसा मत मान के चलिए कि वो 15 दिन या 1 महीना में आपको मूवमेंट्स करने को होगा. बट यस, इट हैपेंस समटाइम्स. तो आप ऐसा पकड़ के चलिए कि आपको 2 महीना 3 महीना आराम से करना है, बट आपको चेंजेस समझ में आ जाएगा कुंभक थेरेपी करने से भी. मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ अंजना. तो Yes. मैंने काफी कुछ योगा और प्राणायाम सीखे हैं, श्री श्री रविशंकर जी के साथ में मैं जुड़ी हुई हूँ. तो मैंने बहुत बार सुना है कि ये जो कुंभक, आप काफी उस पर जोर दे रहे हैं, तो ये कुंभक हर एक के लिए ठीक नहीं होता, होल्डिंग द ब्रेथ. इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि बहुत बार सुनते हैं कि कुंभक और एक रेचक होता है, तो ये सब चीजें जो है बहुत ही केयरफुली करनी चाहिए. सुना है, बताइए इसके बारे में. मैम, एक बात यही बोलना है कि स्वामी जी के और भी हमारे जो सिस्टर कंसर्न्स हैं, वो लोग बीपी, हार्ट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कैंसर तक वो लोग ब्रेथ होल्ड से ठीक कर रहे हैं. और हम लोग यहाँ अष्टांग चिकित्सा में न्यूरोमस्कुलर हेल्थ इश्यूज रिवर्सल्स कर रहे हैं. तो आप खुद सोचिए, अगर प्रॉब्लम होता तो क्या ये सब रिवर्सल्स पॉसिबल था? तो इसलिए आप लोगों के बोलने पर मत जाइए. See, when we have every week we have 50+ participants joining, so you can understand people are benefiting. Live testimonies भी आए थे. तो ब्रेथ होल्ड से आपको नुकसान क्यों नहीं पहुंचेगा? जब तक आप उसको फोर्स नहीं करते हो बॉडी पे, आपको आराम से करना है. अगर आप 2 काउंट्स तक होल्ड कर सकते हो, तो बराबर 2 काउंट्स तक होल्ड करिए. Let your body decide when it can do more. You are nobody to decide कि you have to forcibly do it till 10 counts. आपको जितना बॉडी से आराम से होता है उतना करना है. तब आप कभी भी तकलीफ नहीं पाओगे कुंभक से. बट अगर आपने जबरदस्ती किया तो आपको प्रॉब्लम होना ही होना है. Okay, that's very nice for me to understand that. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. टोटल ड्यूरेशन कितना है मैडम? हाँ, टोटल कोर्स का ड्यूरेशन कितना है? ये हमारा 9 वीक्स का प्रोग्राम है. सब कुछ आपको वेबिनार ग्रुप में दिखेगा. ओके. ये वैसे हमारा 9 वीक्स का. What is the duration for every class? It Ma'am, starts we at just 6 p.m. said it's 60 to 90 minutes. It varies only because of the reason that questions have to be answered. Sometimes there are net issues, there are senior citizens. So it varies from 60 to 90 minutes. Okay, thank you. Okay.
So I hope all the Okay. questions have been answered. One second, Rachna ji, 1 second. Yeah. Now the course is of say about 2.5 months, 90 days, you are saying. So in Yes. my case, I have to keep continuing it. If I find any difference, I can keep continuing it. Yes, yes, Matlab, ma'am, again, you I have will to have to keep continuing. rejoin the course. Uh, We have to Rejoin rejoin in the the course. sense, Rejoin means like we have rejoin to in the do the, sense. you have to do the payment again, or this is once for all payment. No, this is once for all. 6,500 is for the entire 2 months. You don't have to pay even one single penny extra. No, after 2 months, like Swamiji said, it may take 1 year for me, or 2 years, No, or you 3 don't years. have to pay anything extra, ma'am. You have 1 month support from our end. 6 months you get the video recording, and anytime you require support from our end, in the sense you would like to talk to any of the mentors, we are surely available for you. So don't worry about that. You don't have to make any payment other than that 6,500. if And we have like any like questions, Swamiji said, it may take 3 years. Suppose teens are 40 years old, so it may take 2 years or 3 years. So all these 2 or 3 years, I can keep consulting you all. 2 years 3 years मैम देखिए आपका एक बार कोर्स हो गया जो हमारा सपोर्ट है हम लोग वो दे देंगे अब इसके बाद आपको कंसल्ट करना है स्वामी जी को सो देन इट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर Okay, if we otherwise have I have questions, to keep continuing the treatment by myself. yes you have the recordings with you and you will have the PDFs also with you so you can continue the kriyas. if we have any questions before Saturday, can we ask on WhatsApp group? Yes, Yes, definitely ma'am, no Okay, worries thank you. about that. Thank you so much. Okay, thank you so So much. thank you so Thank much. you. And hopefully we've answered all the questions from my end, whatever was possible. After this, if you have any questions, please feel free to write in the webinar group and the admins, people are going to answer it. Thank you so much. Stay well, stay well. Thanking you and signing off. Rachna. Namaste.